There has been a lot of technology, just let's say computers or smart boards in India for the last decade or so. However, there wasn't enough emphasis placed on the quality of the software or on the research that behind the content that the children would be getting. We started miNd in private schools as far back as 2009, so it's already been 8 years on the ground. The Global Innovation Fund has embarked on this path-breaking opportunity to bring a high-quality, evidence-based miNd program to 40 government schools in the Rajasthan state. Rajasthan is the first state where we're working with the government in partnership with them to bring this high-quality learning software to the children who need it the most. The government has been very supportive in providing us schools with computers and has provided all the permissions in relatively short notice to enable us to start this program immediately. These 40 schools are chosen in 4 districts where the computers, the training, the implementation of the software and the process discovery of how to integrate technology in education is being brought about. We selected 80 schools across 4 districts and by lottery selected 40 of those to receive miNd and the other 40 to not. And the beauty of an approach like this is that you can effectively compare a student in a school which had miNd to a corresponding student in another school which wasn't, and you know that the difference between the outcomes of these 2 students are entirely because of miNd because the program was allocated on the basis of a lottery and nothing else therefore differs between these kids on average. We have been working in Rajasthan for last 2 to 3 months where we have been implementing this program in 40 other schools. The program is about having 3 years of miNd in these schools at least, where there is a high-touch intervention in schools where we go and visit, train teachers, train students how to use miNd. सबसे पहले हम उसमें स्कोपिंग का काम देखते हैं कि यहाँ पे जो miNd की लर्निंग लैब है उसको स्थापित करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। स्कोपिंग के बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जिसमें सिविल वर्क, इंफ्रा वर्क, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फिर हम वहाँ पे फर्नीचर डिलीवर करते हैं। So when you visit the school, we also obtain the student list from them. Then the student IDs are created. Those are actually done online, and then once the server is set up, all these IDs are actually pushed into the server. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, या फिर पता है कीबोर्ड माउस का पर यूज़ कैसे करते हैं वो नहीं पता है। तो उनको हम कीबोर्ड में कीज़ का कैसी होती है, कहाँ पे होती है, उससे लेके माउस को ग्रिप कैसे करते हैं, वो जो डिटेल्स है, जो छोटी से छोटी डिटेल्स है वो हम बताते हैं। उसको कैसे ड्रैग करेंगे, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो सभी चीज़ें उनको बताते हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में हम बच्चों को जो थियोरेटिकल सिखाया है वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का बोलते हैं, जिसमें बच्चों को यूज़र नेम पासवर्ड कैसे एंटर करना है, कैसे माउस प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ करनी है और क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो कैसे दे पाएंगे, और उसमें उनका रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट जनरेट होता है और जिसको वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो सभी चीज़ हम उनको प्रैक्टिकली करवाते हैं। जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनको पूरी मदद मिलती है। उनको स्टूडेंट वाइज, स्किल वाइज रिपोर्ट मिलती है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने जो लेसन प्लानिंग है, उनका जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें वो बदलाव कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो बच्चों का लर्निंग आउटकम है उसको बढ़ा सकते हैं। हर बच्चे पे पर्टिकुलरली ध्यान देना वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे 60-65 बच्चों की अगर क्लास है तो हर बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बच्चा अपने लेवल को जान के उसके अकॉर्डिंग सीख सकेगा। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल में ये स्टार्ट हुआ है। इससे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। एक तो बच्चे क्या देख के जल्दी सीखते हैं, करके भी जल्दी सीखते हैं, तो ये देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं बच्चे, तो इनको कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। जो चीज़ हम महीने 2 महीने साल भर में नहीं सिखा पाते हैं वो कुछ ही 10 मिनट के अंदर में बच्चों ने उस कंप्यूटर पे काफ़ी इजी में कर लिया और बच्चे आपस में भी फिर उसके बाद जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कमज़ोर बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और नो डाउट इससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जल्दी सीख पाएंगे और इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे को लग रहा है कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनका रिजल्ट भी और ज़्यादा अच्छा बनेगा। और जैसे हमारे स्कूल में रिजल्ट अच्छा हो जाता है तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम है आपको और स्कूल के अंदर भी लागू करना चाहिए। During this multi-year project that we are doing in Rajasthan, we're investing in systems and processes that would allow us to track learning and usage in each of these schools. Given that we're collecting data of every child answering the question choice and the time they're taking, this provides us a great insights into where children are struggling the most.
We hope to create a blueprint on how this can be used in multiple other schools. The insights from the data can be used by an academic body like the SCRT that can help with teacher training on the concepts that children struggle the most with. In this project, the Global Innovation Fund has been generous in terms of supporting a 3-year project that includes an independent third-party evaluation being also done. At the end of this process, we hope to share with the world a public good that talks about how technology can be integrated in the existing systems and processes in multiple schools around the world, and creating a body of knowledge through the Learning Lab research, which is published in academic journals, that explains the pedagogy behind what is effective to improve learning and math scores. There is remarkably little evidence about how you would actually use computers in a way that students get stronger in core subjects. So like here, the entire focus is on math and Hindi, which are in some ways the foundational subjects for students to do well later. So this seems like one of the most promising things that is happening in this space globally. So miND was on the cover of The Economist in July, and part of the reason for that is just the fact that there is very little evidence from any setting of the kind of gains that we've seen in Delhi.